Hello students, topic for today is sales return book. First of all, what is sales return book? Sales return book are those books which records the return of goods which is already sold to the customer on credit basis. It means that a business previously sold goods on credit to the customers and customers feels that goods is not according to the sample, that goods is damaged in transit, any problem when customer feel, then the customer will return the goods to the business and business will record that goods in that book or sales return journal or sales return books. Today we will discuss about how we can maintain the sales return book. But when a customer return goods, then customer have to prepare a credit note and original copies should be sent along with the goods to the seller. अभी credit note क्या होता है? Credit note is the evidence in which date and the name of the customer is mentioned. In credit note, it is already decided that the account of customer should be credited. That why we call that document a credit note. Then how the format of sales return book is on blackboard. First column is for date, means on credit note date is mentioned, that date you have to record. And then after particular means name of customer, which customer returns the book, and which customer we have to credit the name, we have to record that name of that customer in that column. Then after credit note, as you know, credit note number, as you know, each and every credit note have a credit note number and you have to enter that credit note number in that column. Then after ledger folio, as you know, sales return journal or sales return book is a form of journal, and ultimately after maintaining the sales return book, that book is have to post it into ledger, and on which folio number it is to be posted in ledger, that folio number should be mentioned in that column. Then after detail, in detail column we have to write the detail regarding the goods which is to be returned from the customer. Detail means total price relating to the return. Then after sales return, and you have to write here exact sales return of the goods, means how the price of goods which is to be returned by a customer to the business. Then after output CGST, as you know, we are maintaining sales return book, then we have to write here output CGST because we have already charged the GST to the customer and that goods is totally returned by the customer. So we have to write here output CGST and then output SGST and then output IGST. I think you have noticed that when output CGST and output SGST will implemented and when output IGST will implemented. Then after you have to write the total amount in last column, that is the total amount column. I think it is just like a purchase return book, and we have already discussed about the purchase return book, so it is also called purchase return and sales return. Purchase return inward book, sales return is return inward book, and purchase return is return outward book. It is also called with both the name. I think it is clear, and you are able to solve the related questions. It is very easy, and we will discuss later journal proper. Our next topic is journal proper. After subdivision of journal into different subsidiary books, finally at last we have to prepare journal proper. It means that journal proper is subsidiary book, and in journal proper only those transactions are recorded which
is not to be recorded in different subsidiary book like purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, etc. It means that अगर हम सीधा ऐसे समझे कि मान लो कि अगर आपके बिजनेस का ट्रांजैक्शन बहुत ही ज़्यादा हो, पर डे लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑकर हो रहे हैं, उस केस में क्या होगा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन इन जनरल प्रॉपर. दैट वाई यू हैव टू प्रिपेयर डिफरेंट सब्सिडरी बुक लाइक परचेज बुक, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एक्सेट्रा. एंड मतलब आप टोटल जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उनको 7 घर में बांट लो सीधा सीधा. जो जिसकी योग्यता रखता है उसको उस घर में भेज दो. जैसे अगर हम कैश बुक की बात करें तो कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते थे? कैश बुक में हम केवल कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे, आइदर इट इज़ सेल और परचेज. सेकेंड थिंग इज परचेज बुक में बात करें, परचेज बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते थे? क्रेडिट परचेज इन द फॉर्म ऑफ गुड्स. अब बात आती है कि सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड करते थे? तो क्रेडिट सेल्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स. सेम वे परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न. अब मान लो कोई एक ऐसा ट्रांजैक्शन हो जो इन सब में ना जाए, तो उसको कहाँ भेजोगे? तो उसके लिए जो घर है, मतलब उसके लिए जो जगह है, द प्लेस फॉर दैट ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड जर्नल प्रॉपर. अब कहोगे सर ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन है जो किसी में नहीं जाएगा? तो मैं सिंपली बताता हूँ. कैश बुक में कैश आता है, कैश से संबंधित बात है. अगर बात करो कि हमने क्रेडिट परचेज कर लिया कोई एसेट को, हमने एसेट को खरीदा, मतलब वो भी उधार खरीदा, वेयर इट विल रिकॉर्डेड. अब हम कैश बुक में तो ले नहीं जा सकते क्योंकि कैश बुक में केवल कैश ट्रांजैक्शन जाते हैं और एक क्रेडिट है. सेकेंड थिंग इज़ दैट परचेज बुक में हम क्रेडिट परचेज लिखते हैं बट ओनली गुड्स के केस में लिखते हैं. अब बात आती है सेल्स बुक में जाएगा नहीं, परचेज बुक में जाएगा नहीं, और परचेज रिटर्न बुक में जाएगा नहीं, सेल्स रिटर्न बुक में जाएगा नहीं, तो जाएगा कहाँ? इट्स प्लेस इज इन जर्नल प्रॉपर. इसकी रिकॉर्डिंग हम कहाँ करेंगे? जर्नल प्रॉपर में. Likewise, there are a lot of transaction occurs in a business where they have to be recorded in journal proper because the characteristic of sales book, purchase book, cash book किसी के साथ ये मैच नहीं होती, उसे हम जनरल प्रॉपर में भेजते हैं. अब जनरल प्रॉपर कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हट के आ गया. जनरल प्रॉपर इज़ लाइक जर्नल, मतलब जनरल ही है, लेकिन जनरल अगर हम छोटा बिजनेस का जब ट्रांजेक्शन बनाते हैं उस समय हम सारा का सारा ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग जर्नल में करते हैं. बट व्हेन बिजनेस इज़ वेरी वाइड, बिजनेस इज़ वेरी वास्ट एंड लैक्स ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑकर्स पर डे, in that case you have to maintain different subsidiary book, and finally you have to record some transaction in journal proper also. That why we can say that हम जैसे कि घर है, हमारा घर होता है कि सबके अलग अलग रूम हैं. सपोज कि इसमें तुम रहोगे, उसमें भैया रहेगा, इसमें दीदी रहेगा एंड सो ऑन. पूरी फैमिली को हमने डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है. एक गेस्ट रूम हम क्यों रखते हैं? जो किसी रूम में रहने लायक ना हो वो कहाँ रहेगा? गेस्ट रूम में रहेगा. सेम वे जो किसी सब्सिडरी बुक में रहने लायक नहीं होता है उसे हम जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं. जैसे ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री, ट्रांसफ़र एंट्री. आई थिंक वी ऑल हैव डिस्कस्ड अबाउट इट कि ओपनिंग एंट्री क्या होती है, और उसकी तो कोई किसी सब्सिडरी बुक में जगह ही नहीं है, तो उसको कहाँ लेके जाएंगे हम? सीधे जर्नल प्रॉपर में. क्लोजिंग एंट्री सेम वे वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल द क्लोजिंग एंट्री इन जर्नल प्रॉपर. Same way adjusting entry, transfer entry, rectifying entry, all types of entry, special types of entry will be recorded in journal proper. अभी एंट्रियाँ होती क्या है? अगर डाउट है तो एक बार बुक खोल के आप पीछे से देख लो. व्हाट आर द क्लोजिंग एंट्री, व्हाट आर द ओपनिंग एंट्री, व्हाट आर द adjusting entry, व्हाट आर द rectifying entry. I think it is we have already clear about that.